आपका साइंस का टॉपिक है एबायोटिक वर्ल्ड, ठीक है। एबायोटिक वर्ल्ड, the abiotic or non-living world consists of three distinct parts. Atmosphere, the air blanket around the earth made up of several gases like oxygen, carbon dioxide, nitrogen, hydrogen, neon, argon and water vapors from the atmosphere. तो ये जो आपके बताया कि ऑक्सीजन 21% होती है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0038% होती है, अदर चार्जेस गैस लेस देन 1% होती हैं और नाइट्रोजन गैस 78% होती है इसमें। अच्छा जी, कंपोजिशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर है। उसके बाद है जी हाइड्रोस्फीयर, ऑल द वाटर on the earth's surface from the hydrosphere. Water bodies such as the seas, rivers, ponds, lakes and glaciers are the major forms in which water is present on the earth. Lithosphere. The lithosphere is a rock that forms the outer layer of the earth. It extends to the depth of about 100 kilometers. The other abiotic factors, light and temperatures are some of the other important abiotic factors required from the several of the abiotic world. Light, plants need lights to make their food grow and develop. The sun is the source of light for a plant. The shoot of plant grows towards light. Number next, temperature. लाइट के बाद आ गया, लाइट होगी तो उसके साथ टेम्परेचर। सेकेंड थिंग आ गई टेम्परेचर। The earth is the only planet known to have any life from on it. The reason is that it has a optimum temperatures for various life form to exist. Temperature is a measurement to how hot or cold something is. It is an important factor that regulates the distribution of plants and animals on the earth's surface. Plants and animals seen in colder regions such as two poles like the polar bear and snow leopards cannot survive at the equators. Similarly, those seen in the hotter regions will not be able to survive at the poles. Animals can be grouped into two categories. Animals whose body temperature do not fluctuate with environment changes are known as the warm-blooded animals. For example, human beings, polar bears, etc. Animals whose body temperature changes with the outside environment temperature are known as the cold-blooded animals. For example, lizards, snake, etc. Some cold-blooded animals are made to survive in the extreme climatic conditions. During hibernations, organisms reduce or lower their activity to survive the external conditions. For example, they enter caves and burrows in the ground to sleep in the freezing winter passes and come out only when the snow and ice begin to melt. Some animals tend to move away from travel away from the adverse conditions in the habitat and then come back when the conditions are favorable. This process is called migration. Air, oxygen, carbon dioxide and nitrogen are the very important components of air that are required for the survival of the biotic world. All living organisms require oxygen for respiration. Oxygen is taken in by all living organisms. However, only the green plants release the oxygen into the air by the process of
photosynthesis. Similarly, carbon dioxide is released into the atmosphere by living organisms during respiration as a byproduct of oxidation of food. Green plants absorb carbon dioxide to make their own food. Water. Each is called the blue planet. The blue planet. The very existence of life on this planet is due to the presence of water. 70% of the Earth's surface consists of water. It is required for survival. It is the major component of all living cells. 90% of the cells is made up of water. Plants absorb water from the soil through their roots. Animals drink water or get water from the food they eat. Soil. The uppermost layer of the earth crust is called soil. It is a major source of all minerals like iron, calcium, magnesium, aluminium, copper, and potassium. These minerals dissolve in the water and are absorbed by plants and are utilized for their growth. Animals eat the plants and thus the minerals are transferred into them or utilized by them. In the next chapter, we shall study the interactions between the biotic and abiotic world in various habitats. उसके बाद बच्चों पॉइंट्स रिमेम्बरिंग है आप लोगों के, ये सारे आपने लिखने हैं. All living things are made up of cells. बेसिक ये आपने लिखने हैं सारे. Living things responds to stimuli. Living things become larger and more complex as they grow. Plants, the procedure can make their own food by photosynthesis. Animals are consumers and are dependent on plants. Living things respire, excrete, move, and reproduce. Living things have a lifespan. Next, the environment is the surrounding around an organism. A habitat consists of the abiotic and biotic world. Plants and animals are from the biotic world. Lithosphere, hydrosphere, and atmosphere are the major components of the abiotic world. फिर ये सारी नीचे डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट सी, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में लिखवाई जाएंगी या लिखवाते हैं, लिखना चाहते हैं तो लिख. अच्छा जी, तो बच्चों अभी आप डेफिनेशन लिख लें. अच्छा जी बच्चों, सबसे पहले डेफिनेशन आप लिखिए. सेल, द स्मॉलेस्ट living part of an animal's plant is a cell, right? Number 2, tissue. Tissue है जी, when a group of cells work together to perform a function.
to perform a function, to perform a function they from a tissue, they from a tissue. नंबर थर्ड पे बच्चों ऑर्गन, ORGAN organ. Several tissues performing a specific function, specific function from an organ, Number third, unicellular organism. Some plants and animals which have only a single cell are known as unicellular organism. Number 5 number पे multicellular organism. Multicellular organism. Some plants and animals have bodies which are made up of many cells are known as a multicellular organism. Are known as multicellular organism. अच्छा बच्चों, सबसे पहला डेफिनेशन मैंने आपको मुख्तलिफ टाइप्स की बताई है, तो ये आपने 5 डेफिनेशन करके आपने याद करना है, ये आपको शॉर्ट नोट्स में आ सकती है, ठीक है। डेफिनेशंस आज ओनली 5 हैं, इनको मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
कि सबसे पहली बात ये है कि हमने कहा सेल, जिसका मैंने आपको स्टार्ट में बताया द स्मॉलेस्ट टी नहीं है इसके आगे, सॉरी, द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल्स और प्लांट्स इज कॉल्ड सेल। यानी कि जो बेसिक यूनिट होती है लाइफ की, चाहे वो एनिमल्स की है या चाहे इनकी है, दरख्तों की है, जिसकी भी है, इसको हम कहेंगे द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन एनिमल्स और प्लांट्स इज कॉल्ड सेल, इज अ सेल। टिश्यू, वैसे मैं आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देता हूं कि सेल जो होते हैं बेसिक यूनिट लाइफ होती है, मतलब उसकी इस तरह एक एक ईंट आप ऊपर नीचे करके लगाते हैं, जिस तरह ये देखें, सबसे पहले आपने एक ईंट लगाई, उसके साथ दूसरी लगाई, फिर तीसरी लगाई, फिर चौथी लगाई, फिर पांचवी लगाई, फिर ये ऊपर आप आगे यहाँ पे आपने सेकेंडरी का काम शुरू कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, ठीक है, फिर उसके बाद ये आ गया, फिर आगे इस तरह बच्चों जो बेसिक आपकी मतलब एक एक मिल के आपके घर को बनाते हैं, इस तरह एक एक सेल मिल के आपकी बॉडी को बनाता है। जब ये सेल बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह पे, अ लार्ज ग्रोथ ऑफ सिमिलर सेल, एक जैसे सेल ज्यादा जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो सेकंड थिंग आपकी टिश्यू बन जाता है। जब टिश्यूज बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं सेम, तो वो आपका एक ऑर्गन बना देते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरी फिंगर्स है, ठीक है, हैंड्स वगैरह, ये पूरा क्या पूरा एक ऑर्गन है, इससे मैं किसी चीज को टच भी कर सकता हूँ, किसी चीज को पिक भी कर सकता हूँ, किसी चीज को नीचे थ्रो भी कर सकता हूँ, राइट। तो ये एक पूरा ऑर्गन है, इसे ऑर्गन, और जब ये ऑर्गन आपस में मिलते हैं तो ये जॉइंट्स का ऑर्गन आ जाता है, फिर ये जॉइंट्स का शोल्डर आ जाता है, और ये सारे ऑर्गन आपस में मिलकर ये फिर एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। और सिस्टम जो होते हैं बहुत सारे सिस्टम मिलकर आपस में बॉडी बनाते हैं। फिर आगे आपको आगे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर जिसके अंदर सिंगल सेल पाया जाता है, चाहे वो एनिमल है या प्लांट है, उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। और मल्टीसेलुलर में सम प्लांट्स बॉडी व्हिच आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, जो मेनी सेल से बने होते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है।